साईराम once again children. एक बार फिर से सब साईराम. Yes. Okay. Who will be the monitor for today? साईराम बेटा. Okay. अच्छा. तन्मय, अभी तक तुम्हें चांस नहीं मिला क्या बेटा मॉनिटर बनने का? मैम मिल गया. मिल गया. तन्मय बन चुका है, वेदांश भी बन चुका है. अच्छा, अदर देन दीज टू हु वांट्स टू बी द मॉनिटर, जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है? प्रणव, तुम्हें मिला है क्या चांस मॉनिटर बनने का? मैम मिल गया. मिल गया. ओके. ये इधर कौन है? प्रवंशिका को भी मिल चुका है. तुम्हें चांस नहीं मिला? ओके. तो आज की हमारी मॉनिटर है प्रवंशिका. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट क्लैप फॉर हर. स्क्रीन पे आएगा, देखो आ रहा है. वेरी गुड. चेरी ने भी नोट कर दिया. वेरी गुड. यस. सो आज की मॉनिटर है प्रवंशिका. ओके प्रवंशिका बेटा, अब मैं जब भी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर. अरे वाह, तन्मय ने भी कर लिया. वेरी गुड तन्मय. तो आप मुझे मैसेज कन्वे करना बाकी बच्चों का. ओके बेटा, क्लियर? Yes, say yes Pravanshika, am I audible? Very good. Now listen beta. Yes. As we have started 5th chapter, that is separation, है ना, methods of separation we have started. So in that way we are continuing now. Today we are going to watch a video. Through that you will come to know about different methods of separation. कुछ 2-3 methods हमने discuss भी की थी. Can anyone tell me the names of those methods which we have discussed in our previous class? जो हमने अपनी previous class में discuss की थी, क्या कोई बता सकता है? हाँ, very good. और हाँ, और hand picking. very good. मैम Yes. crushing. Okay, so now we are going to watch a video for that, है ना. हम एक वीडियो के थ्रू भी आज इसको देखेंगे और इन शॉर्ट रिवीजन करेंगे और कुछ न्यू मेथड्स भी सीखेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो हियर नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन. मैम. हाँ मैम, आपने कहा था कि टेस्ट लोगी, तो आप कब लोगी? मैं अभी टेस्ट ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में. मैम रेडी हैं. हाँ, वेरी गुड. मैम So are you ready to watch video? वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी पिक्चर दिख रहा है? Yes. प्रवंशिका बोलेगी. हाँ, ओके. नाउ प्रवंशिका, let me know whether you are getting the voice also. Kevin and Tina are on a road trip. Are it the voice? Yes, ma'am. Okay. Now I am playing it with starting. Okay. ठीक है. Wait. Okay. Another video has started. I started to. Just give me a few seconds. This video also we have to watch, but that we will see next. मैम, एक मिनट. हाँ मैम वेदांश की राय की थोड़ी सी कम आवाज करिए. हाँ, अभी आवाज तो आ ही नहीं रही है. अभी तो बेटा मैं बता रही हूँ तुम लोग को. लेट मी सी. वीडियो थोड़ा सा हो गया है आगे पीछे. चलो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी विल सी this video first and then I will show you that video. अभी हम देखते हैं इसमें. I am going to play. Now here we are going to discuss about sedimentation, decantation and filtration. ठीक है, ये methods हम अभी discuss करेंगे. ओके.
Hello, Professor. Hello, dear girl. You look quite chirpy today. Yes, I am. Today I helped Mom find her lost ring. Oh, really? Tell me what happened. Mom was washing vegetables in the sink, and sometimes. हाँ बेटा. मैम चेरी कह रही है कि वीडियो की आवाज सही से नहीं आ रही. अच्छा, किसी का माइक अगर ऑन होगा ना तो आवाज सही से नहीं आएगी. बाकी सब बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो तो आवाज सही से आएगी. ठीक है, रुको 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक. I am showing you the video. Just wait. Is the screen visible to you, beta? No, ma'am. Okay. Just wait. हाँ, वीडियो अभी आएगा, आप देखो. अभी मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग कर दिया था. दैट्स व्हाई यू वर सेइंग ना कि कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग कर दिया था. अभी देखो, अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. देन यू विल सी. And beta, when the video is going on, you people have to watch it very carefully. आपको बहुत ध्यान से उसको देखना है और समझना भी है. After the video, I will ask some question कि what you have seen in that video. और till then, all of you will keep your mics off. सबके mic बिल्कुल strictly off होने चाहिए. Okay? मैम मानव हाँ. थोड़ी सी वॉइस कम कर दीजिए तो वीडियो की वॉइस सही से आएगी. वीडियो की वॉइस सही है बेटा. मैंने अभी वॉइस थोड़ा सा कम भी कर दिया है क्योंकि बाकी बच्चों के सिस्टम में फिर दिक्कत होती है अगर वॉइस कम कर दें तो. ठीक है, ऑल ऑफ यू जस्ट कीप योर माइक्स ऑफ एंड नाउ एंजॉय दिस वीडियो. Kevin and Tina are on a road trip with their parents. This lesson is about various methods of separation. By the end of this lesson, you will be able to explain the reasons for separating substances. You will also be able to describe the methods of separation of substances, such as handpicking, threshing, winnowing, and sieving. Yes, so in this video we are going to learn about these methods of separation which already we have discussed in our previous class. So in short, we can revise it and it will be very clear to you children. So watch it very carefully and enjoy it also. Looks like we have a problem with the car. The engine is overheating. Don't know why. I'll have to get a mechanic. Hey, Tina, look. We have stopped right near someone's farmland. I wonder if we can take a walk and sit up close. Dad, can we go up to those huts and take a look at this farm while you fix the car? Okay, but be careful and don't go too far. Your mom and I will keep an eye on you both from here. Hello, who are you? Our car has broken down nearby, but our dad is working on it. We just came by to take a look at your farm. Would you mind?
Not at all. In fact, Yes, you can see one family, it was going in the car and their car has broken down, right? और अभी वो फिर उन बच्चे क्या कर रहे हैं, पास में ही एक farm है, they want to go through it, और उनको उसको देखना चाहते हैं, तो they came to that lady and they are taking her permission. You can see that lady is doing something. Watch it carefully. What the lady is doing? From the picture, can you tell me? Yes. Handpicking. Yes. Ma'am, Yes. Okay. Voice is clear, beta, now? yes, ma'am. Okay, then Yes, ma'am. okay. Enjoy it then. I can show you around if you're interested. Let me just finish cleaning these grains. Cleaning the grains? How do you do that? Well, I'm just picking out the impurities in these grains by hand. The grains are quite big in size, and the amount of grain that I need to clean is not much. So I can do that quite easily. Hand picking allows me to separate the good grains from the waste and impurities, so that I have clean dal to cook for dinner tonight. Hand picking is the basic method for separation of substances. It involves simply picking out substances by hand and separating them from others. The substances being separated may be impurities that have to be thrown away, like in this case. Or it may be that both the substances being separated are useful, such as if you separate green grapes from black ones from a mixture of the two. I'm done hand picking these grains. Let's take a walk around the farm now. As you can see, these are wheat fields. The wheat is ready for harvest now. Look, there's my husband. What is he doing? He's threshing some of the wheat that has been harvested and dried. Threshing? What's that? Yes. Once the wheat has been harvested, the stalks are dried. Then, each grain of wheat has to be separated from the stalks to which it's attached, so that it can be ground into flour. This method of separating the grain from the stalk is called threshing. It's basically the beating of these dry stalks to shake off the dried grains. It can be done by hand, by cattle, or by using machines. You can see here the method. This method is threshing, है ना? And threshing can be done by hand also, by cattle also, and by machines also. इसमें क्या करते हैं बेटा, जो भी स्टॉक्स होते हैं ग्रेन के, ड्राई स्टॉक्स, उसको क्या करते हैं, जमीन पर पीट पीट करके वहां से उससे ग्रेन को सेपरेट करते हैं. So this method is known as threshing. Already we have discussed. Traditionally, threshing was done by hand, but the cattle helped do this job quickly. Nowadays, threshing machines are also used to separate large quantities of grain at a time. We have one of these machines. It's called a combine harvester. You can see it there in the distance. This is a smart way to separate grain from stalk. Imagine how long this would take if the grain had to be hand-picked off the stalks. Yes. Watch ahead. आगे देखो. Not quite. There is another step before that. You see, even though the large stalk can be... हाँ बेटा. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका. स्क्रीन नहीं दिख रहा. ओके. Wait, I am coming.
हम स्क्रीन में दिख रही बस आवाज आ रही है। लेफ्ट हो गई Okay. दूसरे वाले हाँ. जवाब से। Yes. I'll come. Okay. I'll show it again. है ना अभी. Now watch it. अभी दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So watch it now. मैम वॉइस इज नॉट कमिंग। Separated from the grains by threshing, the wheat grains still have dried husk and chaff, which has to be separated and thrown away before the wheat can be ground. Can that be done by hand picking? No, it would be too difficult and would take too much time. Instead, we use a method called winnowing. Let me show you. In this basket, I have some wheat grains that are still mixed with their husk. Watch what happens now. The husk is Yes. Husk means जो उसमें वो outer cover होता है ना ऐसा हल्का सा. कई बार हम जब गेहूं लेते हैं तो उसमें कुछ कुछ दानों में लगा हुआ भी रहता है कुछ ग्रेन्स पे. हाँ मैम बोलो. अनुभव और धवल को वॉइस सही से सुनाई नहीं आ रहा। बेटा वॉइस इज फुल. आप अपना ऑडियो चेक करो अपने सिस्टम का. वॉइस भी फुल रखोगे तो सुनाई आएगा. है ना. और बाकी सब बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे और अपने घर के बैकग्राउंड में भी अगर कुछ टीवी या कुछ चल रहा है तो उसे बंद रखेंगे तो अच्छे से सुनाई आ पाएगा. हाँ बेटा. तो अभी देखो दिस मेथड इज नोन एज विनोइंग. राइट. विनोइंग में क्या करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ विंड जो भी हस्क वगैरह होता है ग्रेन से उसको सेपरेट कर लेते हैं. blowing away. That's right. The husk is much lighter than the grain. So when I shake it gently and let it drop to the ground, only the wheat grains collect here, while the husk blows away. Wow, that's a neat way of separating wheat from husk. So, do you sell the grains in the market once they have been cleaned? Yes, sometimes. However, we also have a grinding unit on our farm. So we're able to sell finished wheat flour or atta in the market. This is our small wheat grinding machine. Cleaned wheat grains are poured in from the top of the machine. The machine grinds the wheat into a fine powder or flour, which comes out from this opening and collects at the bottom in these large bags. And then this flour is packaged and taken away to sell in the market. Not right away. There is one final step that needs to be completed before it can be sold. You see, this machine grinds the wheat quite well, but there are still some thicker pieces or granules in the flour that need to be separated and thrown away. This is called the wheat bran. Can you guess how this is separated from the wheat flour? Well, it can't be winnowing since we don't want the flour to blow away in the wind. That's right. Instead, the method we use to separate this is called sieving. Sieving is a method of separating substances that are of different sizes. For example, this wheat flour has some fine powdered You can wheat see how the as wheat well as flour some is bigger coming down impurities. and the impurities will be When I at put the this top. through a sieve, the fine powder falls through the small holes in the sieve, while the thicker impurities remain as they are too big for these holes. And hence, the substances are separated. Once the wheat has been sieved, it is packaged and is ready to be sold in the market. I didn't know so many steps have to be completed before we got to eat our rotis. Harvesting, threshing, winnowing, grinding, and sieving. In this lesson,
you learned about various methods of separation. Okay, children. So in this video, we have seen the methods of separations, which are threshing, winnowing, hand picking, है ना? और कौन-कौन? Hand. Yes, sieving. So all these methods we have discussed in this video, and already we have discussed earlier also in our previous class. So it was just the revision. Did you enjoy the video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना clearly visible था उसमें? Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, repeat the methods. बेटा, who will repeat the methods? One more video we have to watch today. हाँ, जल्दी से कौन-कौन सी मेथड इस वीडियो में हमने देखी, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ. Ma'am, Tanmay. Ma'am, Pravanshika. हाँ, प्रवंशिका बताओ. तन्मय ने तो पूछा ही है फिर. हाँ, प्रवंशिका बताओ. Hand picking, threshing, winnowing, sieving. हाँ, very good. Hand picking, threshing, winnowing or sieving. These methods we have discussed in this video. Now one more video we will watch for some different methods of separation. Okay. Now we are going to watch sedimentation, decantation. और ये सारा आप फिर बाद में बुक में पढ़ना भी. ओके. So now we are going to watch this video in which we are going to learn about sedimentation, decantation and filtration. These are also the methods of separation. Hello, Professor. Hello, dear girl. You look quite chirpy today. Yes, I am. You know, today I helped Mom find her lost ring. Oh, really? Tell me what happened. Mom was washing vegetables in the sink, and sometime during that process, her ring slipped and got stuck in the drain. Later, when she realized that her ring is missing, we searched all over but couldn't find it anywhere. That's when I decided to look into the sink and found it there. Wow, it was clever of you to look in the sink. Smart girl. Thank you, Professor. But have you ever wondered why the ring never slipped through the drain along with the water? Because it was big. Smart girl. The water filtered away and the ring got stuck in the holes of the drain. Filtered away? What does that mean, Professor? Well, before I get to telling you about filtration, I think we should greet our little friends eagerly waiting for us. You remember it this time, Professor. Well, I am making a conscious effort not to get carried away. So, hello there, my little friends. I am Dr. Oxygen and my assistant Jerry welcome you to the amazing world of science for juniors. Today, we are talking about filtration. So, hop on kids, the sci-fi ride is about to begin. Do you know how your mother makes cottage cheese at home? To make it, she adds some drops of lemon juice to boiling milk. A mixture containing the chunks of cheese and a liquid is formed. Then, she separates the pieces of cheese from the liquid by using a muslin cloth. Similarly, you must have also seen your mother preparing and serving tea. In this case, she separates tea leaves from tea by using a sieve. Separations like cheese from the liquid and tea leaves from the tea are examples of same separation technique called filtration. Filtration is a technique used for separating insoluble solid particles from a liquid by means of a filter. Yes, you can see now we are discussing filtration. This example of tea leaves we have discussed, right?
तो दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन. इन दैट व्हाट डू वी डू बेटा, लिक्विड और सॉलिड में से को हम सेपरेट करते हैं with the help of this sieve or something, the fine cloth with the help of that. तो उससे क्या होता है, लिक्विड तो नीचे आ जाता है बॉटम में और सॉलिड ऊपर ही रह जाता है. यू कैन सी, जैसे हम जो इसमें यहाँ पर बोला है चीज, सिंपली जो जिससे हम बनाते हैं पनीर, लाइक दैट यू मस्ट हैव सीन एट योर होम आल्सो, समटाइम योर मदर मस्ट बी कुकिंग लाइक दैट, कि जब हम क्या करते हैं दूध में कुछ लेमन जूस डाल के उसको दूध से छेना बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, तो वो जो सॉलिड फॉर्म होता है मिल्क के अंदर वो अलग हो जाता है और उसका वाटर अलग हो जाता है. एंड देन वी सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ अ फाइन क्लॉथ, राइट. एंड सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन टू योर मदर व्हेन शी इज मेकिंग द टी. जब वो चाय बनाती होंगी तब भी तुमने देखा होगा कि शी सेपरेट्स द टी लीव्स, है ना, फ्रॉम द टी with the help of a sieve. क्या हुआ बेटा? मैम स्ट्रेनर से छानते हैं. हाँ, तो ये जो मेथड है हमने क्या किया, लिक्विड से सॉलिड को अलग किया. सो दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन. सो यू कैन सी हियर, फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक. वेट बेटा, लेट मी कंप्लीट. Filtration is a technique used for separating insoluble solid particles from a liquid by means of a filter. Means we use any one of the filter like fine cloth or like strainer. उससे हम क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट कर लेते हैं. सो दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन. हाँ बोलो बेटा. यस यस मैम. मैम ये श्रीखंड बनाने के लिए भी करते हैं. क्या करने के लिए? हाँ, श्रीखंड बनाने के लिए भी करते हैं, राइट. रसगुल्ले भी. हाँ, रसगुल्ले बनाने के लिए भी करते हैं. मैम हाँ मैम हमने 5th क्लास में पढ़ा था फिल्ट्रेशन. जैसे कि कोई पानी है उसमें मिट्टी विट्टी सब चली जाती है, तो पहले उसको बॉईल करते हैं फिर उसको छान लेते हैं 4th में भी देखिए पढ़ा था. उससे, और या फिर एक छन्नी की yes, उससे. yes, yes. हाँ बेटा, तो you must have मैम और फिटकरी भी घुमा देते हैं. so you must have seen these methods of filtration. Now enjoy the video. अभी समझ आ गया मतलब तुम लोग को मजा आ रहा है ना इस वीडियो देखने में? यस मैम. यस मैम. Okay, enjoy it. The muslin cloth and sieve in these examples are used as filters. Always remember that the pore size of the filter should be smaller than the solid particles but bigger than the liquid particles. As a result, the liquid particles pass through the filter, leaving the solid particles retained on the filter itself. Thus, the solid particles get separated from the liquid. The drain holes were smaller than the ring, and that's why the ring didn't pass through. You got that right, my dear. So, if I want to separate solid from liquid, I filter. But I have a question, Professor. Shoot, dear girl. What if I want to filter sand from water? Do I use a sieve for that too? A very good question, dear girl. Why don't I allow science for juniors to answer that for you? Yes, what question did she ask? क्या क्वेश्चन पूछा बेटा? Am I audible? यस मैम. हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन था? यस मैम. मैम वो बोल रही है कि क्या अगर पानी में सैंड है तो हम उसे फिल्टर करने के लिए भी ये छन्नी का इस्तेमाल करेंगे. हाँ, अब बेटा यस, वी कैन यूज दिस, बट what we have to take care of, हमें किस बात का ध्यान रखना होगा? We have to take care that whatever filter we are using, उसके जो pores हैं वो हमें छोटे होना चाहिए साइज में. जो भी सॉलिड पार्टिकल हमको ऊपर अलग से चाहिए उससे छोटा होना चाहिए, है ना बेटा? अपने घर में तुमने जो सीव्स देखी होंगी वो अलग अलग साइज की देखी होंगी. इवन फॉर सीविंग द फ्लोर वी आर हैविंग डिफरेंट सीव्स, है ना, अलग अलग छन्नियों का यूज करते हैं. इवन व्हीट फ्लोर को सिंपली छानना है तो अलग होता है, उससे ही अगर मैदे को छानना है तो उसकी वो छन्नी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में वो अलग होती है, राइट?
तो जो सीव के जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो छेद उसमें होते हैं, वो क्या होना चाहिए, जो भी सॉलिड पार्ट हमको सेपरेट करना है उससे छोटे होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़े साइज के होंगे तो वो भी छन के नीचे आ जाएगा, तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। क्या होगा, अगर गेहूं छानने के छन्नी से हम टी को छाने तो टी लीव्स भी नीचे आ जाएंगी ना, और वो इधर उधर फैल भी जाएंगी। वी कैन नॉट यूज द सेम सीव फॉर डिफरेंट पर्पस, राइट। वही अगर हम चाय छानने वाली जो हमारी सीव होती है, जो छन्नी होती है, उससे अगर हम व्हीट फ्लोर को छानने जाए तो हमारा काम होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसमें भी डबल फिल्टर लगा होता है, उससे आटा कब तक छनेगा, हो ही नहीं पाएगा, उसका साइज बहुत छोटा। सो फॉर डिफरेंट पर्पस वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स आल्सो, एज वेल एज हमें क्या बात का ध्यान रखना है बेटा, फिल्ट्रेशन के समय, फिल्ट्रेशन के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी फिल्टर को यूज कर रहे हैं उसके जो होल्स हैं दैट मस्ट बी स्मॉलर देन द सॉलिड विच इज टू बी सेपरेटेड, जिसको हमको सेपरेट करना है उससे छोटे होना चाहिए, राइट। नाउ वॉच इट। Okay. Consider a case where the difference between the size of the solid particle and particles of liquid is very small. Then a filter with very small pore size is required. Filter paper is one good example of filter with very small pores. Filter paper is generally used for carrying out filtration processes in laboratories. हाँ बेटा, मैम पानी में सैंड कैसे आती है? ये तो अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो, है ना, अगर हमने सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है और हमें उसमें से सैंड को सेपरेट करना है तो व्हाट मेथड वी विल यूज फिल्ट्रेशन। अब इसके लिए लैब में इस तरह के फिल्टर पेपर्स होते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, और सिंपली जिस क्लॉथ से हमने चीज बनाने के लिए वाटर और चीज को सेपरेट किया था उस क्लॉथ से भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत महीन होना चाहिए, राइट, बहुत ही उसके जो पोर्स हैं बहुत छोटे छोटे होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, सैंड भी छन के नीचे चली जाएगी वापस वाटर के साथ। तो वी यूज दिस टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द वाटर, ठीक है। Let's take an example मैम of जब वो separating a सैंड mixture पानी में of चली sand जाती from है तो water उसको using a सेडिमेंटेशन filter कहते हैं। paper. For this, take a round filter paper and fold it. वेट, क्या बोल रहे हो? मैम जब सैंड पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है तो मैम उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हमने सैंड को इसमें मिलाया, फिर थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं तो ऑलरेडी वो नीचे बैठ जाती है, फिर ऊपर ऊपर का पानी हम निकाल देते हैं और फिर और बचे हुए पानी को भी फिल्टर के हेल्प से उसको फिल्टर कर लेते हैं। यू विल सी हियर, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, फिर एक एक मेथड का नाम तुम्हें समझ आएगा। ये जब बॉटम में बैठ जाती है दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन, फिर हम जो ये ऊपर ऊपर का पानी सेपरेट कर लेते हैं दैट इज नोन एज डिकेंटेशन, एंड देन एट लास्ट वी डू फिल्ट्रेशन। So watch the video carefully. All these three methods of separation you are going to get from this video. So watch it very carefully. After watching this video, I will ask the questions from you. So you have to watch it very carefully. Okay, beta? From the middle to get a semicircular shape. Fold the filter paper once again to form a cone. Now, इस fix तरह this से cone सर्कुलर shaped पेपर filter पेपर से paper कोन onto a funnel के शेप में which is बना के already उसे fixed फनल on में the रख stand. देते हैं। Keep a beaker below the funnel and then pour the mixture of sand and water in the funnel. You will observe that the water will pass through the filter paper and will be collected in the beaker. On the other hand, the sand particles which are bigger than the pores of filter paper will be retained on the filter paper. In this way, the mixture is separated. The filtered water so obtained is called the filtrate, whereas the sand collected over the filter paper is called residue. Yes, ये ध्यान रखना, जो वहां पर बचा है that is known as residue, जो ऊपर particles बच गए सैंड के that is known as residue, और जो नीचे water आ गया वो filtrate. Oh, I need to use a filter paper to filter salt water, and salt will become the residue at the end of it. Right, Professor? You got that absolutely right, dear. You should. You know, kids,
Experimenting is a very good way of learning, and things learned this way. Yes, you can do this simple activity at your home also. Sand is easily available. If it is available, you can do. You can take 1 glass of water और उसमें 2-3 चम्मच कुछ सैंड डाल के तुम देख सकते हो. सबसे पहले वो नीचे बैठ जाएगी, फिर तुम उसे इस तरह से फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो. But sand and water can be separated through this method because sand is insoluble in water. But if we are taking the solution of salt and water, can we use the same method to separate salt from water? No. अब इसके बारे में सोचना है. इसकी मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी जल्दी से ये वीडियो देख लो. You will never forget. I will try this with my friends. This sounds like fun. Good idea. But that's later. Right now, Science for Juniors is going to tell us about another separation process: sedimentation and decantation. Come, let's find it out. Okay. Sedimentation and decantation are used for the separation of insoluble solids from liquids or two immiscible liquids. Look at the beaker containing water with impurities. Sedimentation is the process in which the heavier impurities in a liquid settle at the bottom of the container. Decantation is the process of pouring the upper clear layer of liquid without disturbing the settled particles. Sedimentation? Does it have anything to do with soil, Professor? Sometimes. How did you guess? I have read about sediments, and sedimentation sounds similar. I must say, you are a brainy little girl, Cherry. Thank you, Cherry. Professor. Since you are on a roll, why don't I add some more knowledge to your knowledge bank? Do you know? The filtration process, like sedimentation, is a very important and useful process that assists in water purification. Water from the reservoirs is passed into a sedimentation tank where the solid impurities present in water are made to settle down. Since the large particles settle down faster than smaller ones, large impurities collide with and integrate with the smaller particles as they settle. In effect, large particles sweep vertically through the tank and clean out smaller particles on their way to the bottom. With this process, the water gets filtered and becomes free from suspended impurities. But as particles settle to the bottom of the tank, a layer of sludge is formed on the floor of the tank. This layer of sludge must be removed and treated. The amount of sludge that is generated is significant, often 3 to 5% of the total volume of water that is treated. And what is meaning of sludge? Yes, now in this way we have seen how the methods of separation like sedimentation, decantation and filtration are there. With the help of that we separate the सॉलिड एंड लिक्विड, राइट. ये हमने अभी इसमें डिस्कस किया. अभी नेक्स्ट क्लास में हम इवोपरेशन को भी डिस्कस करेंगे. तो अभी मैंने जो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था, हाउ डू वी सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, इसके ऊपर सोचना. इफ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाउ विल वी सेपरेट इट. अब बची हुई मेथड्स को एक बार बुक में रीड भी करके रखना, ताकि जब आप वीडियो देखते हो या मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए. ओके. Now that's all for today's class, children. Today now we are concluding our class with Shanti part. All of you just join your hands and close your eyes. We will do Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, I hope you must have enjoyed the videos today and today's class also. मजा आया आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saira, ma'am. Sairam, you can leave now. Saira, ma'am.
Sairam ma'am. Sai- Sairam ma'am. Now,